Hey guys, this is my very first vlog and I hope you like it. So, शुरू से शुरू करते हैं. The idea was to explore a couple of forts in Maharashtra. So we thought कि थोड़ा ऐसा fort जाते हैं जहाँ पे it does not take a lot of time and is comparatively easy. So we thought that we'll go to Korigad fort because इसमें ज़्यादा time भी नहीं लगता and we can enjoy. The whole point was to enjoy. So, if you're a beginner and all and you want to explore forts, I think this is a good fort to visit. And the view is scenic, it's beautiful. So, let's watch the video. So, हम लोग सुबह जल्दी उठे and we hit the Mumbai-Pune Expressway around 8 o'clock. And if you see, the road is pretty, there is no traffic because it's an expressway. And the weather is also good, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है. From the Mumbai-Pune Expressway, we basically took the exit towards Lonavala. And Lonavala, we took a halt for having some snacks and all. And the place where we took a halt is there on the map. It is Purohit Chikki, and उसके बाजू में एक restaurant है. And they take a lot of time to serve misal pav and South Indian food. जल्दी आ जाता है. So now, if you see that after we left from that place towards the fort, हमने Google Map लगा रखा था, and the weather was just amazing. The only thing was that certain places बहुत ज़्यादा मिस थी, so हम लोग एक जगह उतरे just to stretch our legs, and very misty kind of weather. And as you can see कि कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा ही धुंध और मिस्ट हो गई थी कि रोड पे बहुत कम विजिबिलिटी थी. But still, drive safe, guys. There was one thing that I wanted to share with you guys is finding the way to the fort. हम लोगों ने मैप तो लगा दिया था कि कोरीगढ़ फोर्ट कहाँ पे. So this is my browser at this point of time and let's say you're coming from Pune. कहीं से भी हो, पुणे से आता समझो, तो आपने पकड़ना है ये एक्सप्रेस वे, ठीक है. एंड जब आप एक्सप्रेस वे से लोनावला आते हो ना, सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट. सो लोनावला से आप आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है गोल चक्कर. अब इधर घूमने का नहीं, क्योंकि इधर जाओगे ना, सो यहाँ पे देयर इज अ सम काइंड ऑफ सोसाइटी और समथिंग एंड दे वोंट अलाउ यू टू गो हियर. तो ये तो रूट है ही नहीं, ठीक है. बट गोल चक्कर इज कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट. लाइक इफ यू गो स्ट्रेट हियर ना, तो आपको दिखेगा कि यार किसी ने मार्क कर रखा है कोरीगढ़ फोर्ट ट्रैकिंग वे. सो समवन हैज मार्क्ड हियर, या जूम इन, समवन हैज मार्क्ड कोरीगढ़ फोर्ट ट्रैकिंग वे. और यहाँ पे वेज थाली, नॉन वेज थाली, वाइन एंड बियर की शॉप भी है, बस स्टैंड भी है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है. एंड राइट हैंड साइड पे दिस इज सम पार्किंग एरिया, कच्चा सा पार्किंग एरिया, बट ठीक है. एंड द थिंग इज यहाँ के लोग आर फ्रेंडली. सो इफ यू आस्क एनीवन, जैसे चाय वाले वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, कई सारे लोग ट्रैक करके आ रहे होते हैं, ट्रैक करने जा रहे होते हैं, तो पता चल जाएगा. तो लोगों ने यहाँ पे पार्किंग में लगा रखी होती है अपनी गाड़ियाँ. बहुत कच्चा रास्ता है और ऐसा लगेगा कि भाई जाना कितना, बिकॉज थोड़ा सा चढ़ाई है हल्की सी, लाइक यू नो. एंड ऐसा लगेगा कि आप झाड़ियों में जा रहे हो कि लाइक ओ वेयर इज द वे. आई विल कंटिन्यू इन द वीडियो कि हाउ इज द रूट, बिकॉज आई हैव कैप्चर्ड दैट. आई हैव नॉट कैप्चर्ड द पार्किंग, बट हाँ, दिस इज द पार्किंग. सो यू आस्क एनीवन, यहाँ पे कोरीगढ़ फोर्ट की पार्किंग है. यहाँ पे भी लोगों ने मार्क कर रखे पॉइंटर्स. So we started our trek and यही वो रास्ता है जहाँ पे you enter through the woods भी नहीं, basically a bit of plants and trees, bushes, and बहुत कच्चा सा रास्ता है, like just this small patch, and then you climb up here, and once you basically are on this track, it's flat and इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है.
And then the best part about this place is that there's a lot of greenery and हाँ थोड़े puddles and all भी हैं कच्चा रास्ता भी है because this is a very raw route but most of the people they travel via this route itself. There is another route and that is from the Ambi Valley or Ambe Valley, I don't know what it is called, but yeah, वहाँ से भी एक रास्ता है but I think they won't allow you to enter from there, so I'll show that once we reach that point. And some patches are really rocky and some places are really flat. You can walk slow, just maintain a decent pace. And if the weather is good, it's not raining and all, you will love it. अभी अपने को वहाँ पे जाना है उसके ये साइड है ना वैसे उधर साइड जाओगे तो उसके नीचे अम्बे वैली है. And at this place, the road was very narrow at certain points and there are a couple of puddles. But the trees and all the nature was very scenic and nice. It was green, various shades of green. And there was this nice tree that basically was looking very pretty. And finally here we reached the end of this rocky road. Ambe Valley se aate ho to you come from here. Otherwise, झाड़ वाला रास्ता सारा कुछ एक्सप्लोरेशन वाला रास्ता ही है. पहली स्टेप चढ़ने जा रहा है. And this is the very first place where you take a halt. If you want to sit down, you can sit down. There is a very, very beautiful and scenic view that you will get to see. And just on the way, like next to the staircase, एक गणेश जी का टेम्पल भी है. So वहाँ से आप देख सकते हो उस टेम्पल को. And then थोड़े से चलने के बाद there is another spot where you can sit down, relax and enjoy the beautiful view. By the second point, where you take a short break,
you are really close to the fort. So a couple of things. The first thing, when you go to the fort, enter the gate, और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के you actually reach the actual fort. वहाँ पे मंदिर है, और पहला मंदिर जो है वो है शिव जी का, बट और भी मंदिर हैं वहाँ पे, so you can see all the मंदिर. And then because it was very misty and all, so वहाँ पे लेक्स वगैरह थे, वो भी छुप गए थे धुंध में. But थोड़ी देर के लिए the fog cleared and we were able to see a nice view of the lake. So if you want to visit forts and all and you are a beginner, definitely you can do this. Also there is a flag point जहाँ पे flag है, and you might want to go there and see that. There are a couple of caves also, but I would leave it up to you to explore. And I'm not going to share the videos of the fort itself, but if my friends upload it, I'll share the link for the same. So I hope you like the video and keep exploring.